नमस्ते एंड वेलकम बैक दोस्तों मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सुजाला और आज हम करने वाले हैं फिर से 10 मिनट की वर्कआउट टू टोन आवर बॉडी टू रिड्यूस सम फैट। ओके, सो रेगुलर एक्सरसाइज मैं हर हफ्ते आपके साथ शेयर करती आई हूँ। सो इस हफ्ते की एक्सरसाइज रूटीन ये रही आपके सामने, जो बहुत ही सिंपल है, इजी है, बिगनर लेवल भी कर सकते हैं। 45 सेकेंड्स एक्सरसाइज और 15 सेकेंड्स ऑफ रेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने रील के बाद। हमेशा की तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी देयर ऑन द स्क्रीन। सो पहली हमारी एक्सरसाइज ये रही विच इज़ क्रॉस पंचेस। एंड इस तरह से आपको पंच करना है, मुट्ठी टाइट करके बांधनी है और हाथों को फेंकना नहीं है। यू डोंट हैव टू थ्रो द हैंड्स बट बीइंग keeping the body very subtle, very strong, and then just punching right and left. This is how हम करेंगे। अगेन गाइस 45 सेकेंड्स प्रैक्टिस करेंगे विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। एंड उसके बाद 15 सेकेंड्स ऑफ रेस्ट और जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी, जस्ट टू टेल यू कि दिस इज़ वॉट इज़ कमिंग अप। सो कीप डूइंग, कीप ब्रीदिंग, कीप पंचिंग। Okay, our next practice is up on the screen while we relax. इस तरह से हाथों को स्ट्रेट रख के और ऑपोजिट नी पे हम टैप करने वाले हैं। तो एक स्लाइट जंप, अ स्लाइट हॉप कह सकते हैं, एंड देन यू आर गोइंग टू टच योर palm to the opposite knee. Hop and touch and hop and touch. I am doing 2 hops here. आप चाहो तो एक हॉप भी कर सकते हो, whatever is comfortable. आप चाहो तो और ज़ोर से कूद सकते हो और ऊंचा जंप कर सकते हो. Whatever suits to your body, we can do it here. Keep breathing, guys. And yes, we have just started. Let the body warm up. Let the body generate heat. Let's have some fun. Well done. Coming up next is side plank crunch. So इस तरह से हम साइड प्लैंक में बैठेंगे। आप अपना नीचे रख सकते हैं और हाथों को स्ट्रेट और ऊपर वाले पैर को स्ट्रेट रखते हुए दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू स्क्वीज आवर लव हैंडल्स हेयर। यही प्रैक्टिस हम करेंगे अपनी दूसरी तरफ, दैट मीन्स दूसरी साइड। रुकना नहीं है गाइस, वी हैव टू कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन। बस 10 मिनट की प्रैक्टिस है, मेरे साथ आप करते रहिए, सांस लेते रहिए, रुकना नहीं है। एंड यस, वी कैन डू इट। Next is modified burpees, guys. So you don't have to jump a lot, just hop and step back और push up करेंगे जितना हो सके, and then we'll come back.
वेल डन गाइस, राउंड 2 शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। लेट्स डू क्रॉस पंचेस। Next is hop and cross touching knees. ये एक्सरसाइजेस सारी बहुत आसान दिखती हैं गाइस, बट व्हेन वी डू इट इन अ हाई इंटेंसिटी तरीके से और 45 सेकेंड्स करके 15 सेकेंड्स ऑफ रेस्ट हम करते हैं कंटिन्यूसली, हम जब करते हैं तो हमारी बॉडी एक्चुअली में बहुत वार्म होती है, हीट जनरेट करती है। इस वक्त आई एम इन अ पार्क वेयर देयर इज इट्स सो मच ऑफ विंड and still I am actually sweating. I have actually started to sweat. So again I must tell you that you can repeat these exercises. मैंने 2 बार किया है, आप 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, okay? So whatever, however your stamina is, just rock it, girls. Next practice is on the screen. And that's all guys, last exercise, चलिए जम के करते हैं।
वेल डन गाइस, बहुत बहुत अच्छे से किया आप लोगों ने, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल. प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में.